include stdio dot h. Okay, which is the function in this 3 lines? The function is main. Yes, Anish? मैम वो ब्रैकेट और मेन. Yes, Main and two brackets. correct. So main is my function. So is it returning any value? Pranav and Anish, कुछ value return हो रहा है यहाँ पे? कुछ पूरे program में आप कुछ return कर रहे हो? Are you returning anything in this program? No. So what should I write, Pranav? What is the problem here? Only this value. What should I write? I will write. The main has only this Very value. good. अब अनिश ये चीज आपको पता चली अनिश? Understood? So these are basically my header files. These are basically my header files which are going to include the functions which are clear screen and get character. Clear screen will be having the function of clearing the screen. When I will run this program, I will have a clear screen for printing my output, and get ch for getting the text characters. So that is the use of having the inclusion of two header files, that is std. Std stands for standard and IO stands for input output. Similarly, Conio mein this is console IO. So these are the two header files that I am including to include my respective functions. Is it okay, Pranav? Yes, raise hand. Pranav, tell me. You raised hand. Ask your Ma'am, question. that means code. No, ma'am. Ma'am, what is this file name? Ma'am, in that we have to write dictionary name. Yes, yes. So this is actually the file name which will be including all the related functions which I am going to use in the program. The same way I am using the dictionary. Now directive. Ma'am, can you please that again? Directive. Yes. Standard IO. Ma'am, that I am left to right. Yes, yes. So Pranav, these write down these directives which are used at the beginning of the program are called as, should I write the spelling? Preprocessor directive. So whenever I use something which is just before the program, तो उसको बोलते हैं preprocessor directives. Ma'am, so this is another program part. Yes, this is the part of the same Ma'am, thing so what that was the previous part? Ma'am, that what is the was same. previous part? बेटा जो हम पढ़ रहे थे ना, हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं, बस हम उसी में अंदर यस सेम पार्ट है बेटा, बट उसको आप डिटेल में पढ़ रहे हैं. डिटेल में मतलब पूरा अच्छे से एक एक चीज आप पढ़ रहे हैं. So this is what is the standard IO? No, I am not understanding. Yes, that was standard function. I/O. आप बताइए बेटा, अभी you just see this this global formula. I am giving you this global formula. Now based on this, you tell me what is this stdio. You will tell me what is this. I have given you this formula. अब आप मुझे tell me what. Okay. What? Who is type? Ma'am, please unmute me. Okay. So. Ma'am. Yes, you are unmuted. मैम आपने कुछ ऐसे सिस्टम कर दिया क्या, चेंज कर दिया क्या कि खाली होस्ट के अनम्यूट कर सकता है? Yeah, actually this is many different settings are done by my son, so he used to experiment a lot with the system. Acha, right now I will tell you this stdio.h, your question Pranav, your stdio.h, your conio.h, these are the file names. Write down anywhere for your reference. फाइल्स के नाम. This is what I wanted to ask. Anish, आपको पता चला ना, this is my global formula. This is my global formula. Global formula, Pranav, उसको कहा जाता है, that is applied to every system. So this is my global concept, and this concept I am going to apply. H into stdio.h is your global formula. Global concept. Yes, that is my global concept. So now, Pranav, this is my global concept. So this global concept now applied to each and every program. So for my first program, it is stdio.h. For my second one, it is conio.h. Similarly, I will proceed one by one to different file names with different file names based on my requirement. मुझे जो जरूरत होगी, मैं उतने ही file names को include करूँगी. Is that clear? What is this EG? Yes, beta. This is EG's example, beta. Example.
Ma'am, so this hash include file name means this hash include stdio.h and conio.h. बेटा दिस इज माय ग्लोबल फॉर्मूला, मतलब ये मैंने एक आपको ऐसी चीज बताई है जो हर जगह लगेगी, फिर उसके मैंने मैम एग्जाम्पल्स इसमें बस मैम हम लोग इसकी जगह स्टूडियो की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली दैट इज द पार्ट। तो बेटा डॉट stdio की एच जगह डॉट एच लगाना इम्पोर्टेंट है। डॉट एच का मतलब यस, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आ गया मुझे, व्हाट इज डॉट एच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट एच? Header file. वेरी गुड, सो दिस इज माय हेडर फाइल। तो डॉट एच लगाना इम्पोर्टेंट है, जो भी नेम होगा यस, सो Ma'am, why एवरी do we टाइम need to put a dot? दैट इज द स्टैंडर्ड सिंटैक्स गिवन इन सी बेटा, जो सी का सिंटैक्स है दैट वी आर फॉलोइंग हमने। तो फिर ऐसे तो द क्वेश्चन कैन बी कि व्हाई इज दिस हैश, व्हाई इज दिस ब्रैकेट्स, सो दीज आर द स्टैंडर्ड सिंटैक्स So ऑफ ma'am, dot h एक syntax है. yes, this is the syntax which is designed by the developers, so this is what we So are ma'am, I learning. can write anything instead of stdio and conio. Then you stdio.h में you cannot write anything unless and until it should be some file name बेटा, it should be some file name, कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें वही file name Then लिखना ma'am, है। how we write? Ma'am, then how we write? this way only प्रणव, जो हमने लिखा है that is the only thing that you will write। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि अपनी मर्जी Ma'am, से then 1 minute. अगर हम अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो अनिश वी हैव वन ऑप्शन, उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू डिजाइन अ न्यू लैंग्वेज। अगर हम Yes. किसी भी डेवलपर की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मैं सी पढ़ रही हूँ, जावा पढ़ रही हूँ, एंड इफ एट ऑल आई एम लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज, देन आई हैव टू गेट द सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज एंड आई हैव टू लर्न द सिंटैक्स। इसलिए प्रणव हमें लर्न करना पड़ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, जो डेवलपर्स ने डिजाइन की है दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। So this is our take कि हमें उनका ही syntax follow करना है, and we cannot make any changes based on our wish. If I want to develop my own language, then I have to design my own language and float it among the audience for survey. Point पता चला प्रणव? तो जो चीज हमें दे दी गई है C में, that we have to learn, और different header files के पास different functions हैं। Now Anish will tell me what is file name। Anish, अभी आपने इतना देर का लेक्चर जो अटेंड किया उससे हमने जो समझा है, अब मैं आपको उसकी पूरी समरी बताऊंगी। So what is the file name? प्रणव ये आप लिखोगे, you will write file name in C is basically the name of the library। मैंने अभी आपको वो एग्जाम्पल दिया था ना डायरेक्टरी एंड बुक्स का, डिक्शनरी एंड बुक्स का एक एग्जाम्पल दिया था अनिश। अच्छा, एवरी टाइम यू गॉट म्यूटेड बाय योरसेल्फ? अच्छा, हर बार आप म्यूट हो रहे हो अपने आप ही? दिस इज नॉट द सेटिंग दैट आई नहीं, वो म्यूट कर रहा है. मैं इसको बार बार Ma'am, you allowed to unmute participants. ओके। तो बेटा हाँ मैम नेम, हाँ फाइल बोलो। नेम मैम, नेम जो होगा फाइल का उसे हम कहेंगे। तो नेम ऑफ द लाइब्रेरी फाइल, library file, Pranav you have to write this, the name of the library file, what is the file name? It is the name of the library file which हम includes अगर हम स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं तो स्टूडियो फाइल का नेम होगा। this is not studio, Anish, this is stdio। std is a हाँ standard, स्टूडियो स्टूडियो std is standard, standard इसका full form है, और dot h header file के लिए है। So Pranav, my last thing that I want to tell you in today's important lecture is name of the library file will contain dash. Give me the answer. मैम प्रणव को अनम्यूट करो कह रहे हैं। बोलिए प्रणव। Ma'am, name of the library file is the name from which you take these words. हाँ, very good. So those are the, tell me, that is the function name, name of the library function, name of the library file, हाँ, that contains the function names, the function names है ना, that contains word नहीं बोल सकते प्रणव, इसमें हम अब पूरा टेक्निकल अच्छा, हाँ, that is the function, so that This contains, name of the library file. हाँ, that contains the function definitions, okay।
So that is important. अब अभी अनिश आपको थोड़ा थोड़ा overview idea मिला होगा. And other than this, one day we keep for theory and one day we keep for practical. So this is the theory section. Theory section में जो हमने practical में किया होता है उसका in depth theoretical knowledge मैं देती हूँ. और उसके बाद कल के क्लास में प्रणव I will see your text message. ठीक है, टेक्स्ट आपने जो प्रिपेयर किया प्रणव, that I will see tomorrow. You will type it जो आज उड़ गया था ना, you just lost it. Ma'am. Yes, Pranav, tell us. Ma'am, can you write by making arrow what is function and what is the just explaining part? Yes, yes, sure, I will write. Okay, very good. Keep asking such questions so that I will get to know कि आपको कहाँ ज्यादा चाहिए. अब बेटा फंक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. printf. printf is the function. एक और एग्जांपल मुझे अनिश दे सकता है. अनिश, आपने लास्ट ईयर जब घर पे आता था वशिष्ठ, तो यू अटेंडेड few lectures, है ना, कि नहीं किया था आपने? नहीं, मैंने अटेंड नहीं किया था. printf, scanf, getch. Yes, getch. Ma'am, I know. Very good. Many examples you have given. So these are the function examples, and No, these ma'am, are I the. want to ask Yes, that today what we have write in that which are functions Okay, I will show it by arrow. This no, that this we you. have to write in program. Yes, today in program, Pranav, you only need printf. Today for today program, that is writing a text. No, ma'am. Complete. I don't know, ma'am. Ma'am, we have written this. No, this hash include file name, hash include stdio.h, this name of the library, conio.h. Correct, huh? Ma'am, in that, what are the functions that we have to write in the program? No, Pranav, today we are not writing any program. We are just explaining each and every program that we have done till now. अभी तक जो हम कर रहे हैं बेटा, उसी को हम explain कर रहे हैं. Today we are not going to write any program. No, ma'am, in this. Which आप we have हिंदी written in में the you can theory ask part. me